हेलो एवरीवन। आज हम लोग हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. Now we are going to use superposition principle in the case of superposition principle to find the electric field intensity. So we can write a topic electric field intensity due to system of charges that is called superposition principle. So let us consider we are having so many charges, namely Q1, Q2, Q3, Q4, and we have to find the electric field intensity due to all the charges on a point Q0. So to find the electric field intensity on the charge Q0, what we have to do? So simply we have to find the distance between all these charges from point Q0. Okay. So if the distance between Q2 and Q0 is R2, Q0 and Q4 is R4, R3 and R1 respectively. We have to find electric field intensity on point P. तो जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो वहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं? तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं Q0. फाइन. तो जब हमको Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. तो अगर Q1 और Q0 के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, Q0 एंड Q2 के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, Q3 एंड Q0 के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 है एंड सो ऑन. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन चार्ज Q0 that is E equal to E1 plus E2 plus E3 dot En. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन दे देंगे. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E1? E1 कैन बी रिटन एज 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R1 square plus 1 by 4 pi epsilon naught into Q2 by R2 square plus dot 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rn square. अब डायरेक्शन को कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे? तो यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे. ठीक है. नाउ वी कैन टेक 1 by 4 pi epsilon naught कॉमन, तो ये हो जाएगा Q1 by R1 square R1 कैप प्लस Q2 by R2 square R2 कैप प्लस डॉट Qn by Rn square Rn कैप. ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द टेस्ट चार्ज Q0. ठीक है. तो जस्ट लाइक इन द केस ऑफ फोर्स, जब हम लोग फोर्स फाइंड करते थे वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब हम लोग अप्लाई करते थे तो हम लोग क्या करते थे? टोटल फोर्सेस को हम लोग वेक्टर सम करते थे. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे सिंपली.
that will give the electric field intensity due to the all these charges on given point on the given point. ठीक है? So that is called the superposition principle in case of electric field intensity. Now let's move to the next topic. We will solve some question on this topic, but not now. Next classes में देखेंगे. But for now, we are going to study a topic that is called electric field lines. Electric field lines. Now, what is electric field lines? So basically, electric field lines are the virtual lines. Imaginary lines बोल सकते हैं, virtual lines बोल सकते हैं. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या शो करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो करते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, वो उस पॉइंट के पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता है. ठीक है. सो वी में डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एज these are the imaginary lines in a region such that the tangent at any point on the field line gives the direction of electric field intensity at that point. So suppose this is an electric field line and अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना है? इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So what we will do, we will simply draw the tangent, and the tangent will give the direction of electric field intensity at the given point. ये जो हम लोग पॉइंट लिया था, ये जो हम लोगों ने कोई भी पॉइंट लिया P Q whatever, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को शो करता है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सम इमेजिनरी लाइंस, और ये लाइंस क्या करते हैं? तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करते हैं. ओके. So we have to do so much about the electric field lines, and electric field lines have some properties. So let's move to the properties of electric field lines, and then we will see some electric field lines related to positive charge, negative charge, and so many things. Okay. So let us first deal with the properties of electric field lines. That is, these properties are very important. So we must pay attention about these electric field lines. So first of all, let's move to the properties of electric field lines. Properties of electric field lines. First property, electric field line originate from positive charge and terminate on negative charge. So ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाते हैं. तो अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है. दे विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस चार्ज एंड दे विल एंड ऑन माइनस चार्ज.
ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी, these are the virtual lines, मतलब ऐसा होता ही नहीं है। अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है तो ऐसा नहीं है कि हाँ प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुए माइनस पे आके। ये सिंपली हम लोगों ने समझने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया है। देयर आर नो सच लाइंस प्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए ये वर्चुअल होते हैं। देयर आर नो रियल कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, the tangent drawn to the electric field line at any given point gives the direction of electric field intensity at the given point। ये हमको पता है, that was the definition of electric field lines। So basically जब कोई भी हमको सपोज करो दे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, हमको पता करना है कि इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है। जब भी हम उस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया इन तीनों पॉइंट्स पे, ये उसका डायरेक्शन हो गया। जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, two electric field lines can never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कट कर सकते? देयर इज अ रीजन फॉर दैट। लेट अस कंसीडर देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को कट कर गया, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन अगर इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, और उसी पॉइंट पे हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। नाउ देयर इज अ कंट्राडिक्शन अराइज हियर। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक ही सिंगल पॉइंट है और इसी सिंगल पॉइंट पे हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको दिख रहा है। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही हो सकता है, दो डायरेक्शन तो कभी नहीं हो सकते। बट अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हमको दो डायरेक्शन मिलने वाले हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चार्ज अगर हम उस पॉइंट पे रखते हैं और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो चार्ज दोनों डायरेक्शन में एक साथ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो बाय द डेफिनेशन we can conclude that two electric field lines can never intersect each other. Fine. Next point. The density of electric field line of electric field lines represents the magnitude of electric field intensity. Means let us consider two cases. These are the electric field lines
in first case. In second case, these are the electric field lines. In first case, what we can see, the electric field lines are very closely spaced, and in case B, we can see that electric field lines are far away from each other. So we can say that in case A, the electric field lines have more density compared to the case B. So we can say that this represents a strong electric field, and this represents a weak electric field compared to previous case. Okay. Next property, we can say that electric field lines cannot form a closed loop. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ स्टेप्स के लूप्स नहीं फॉर्म कर सकते, ठीक है. दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स बट दे कैन नॉट फॉर्म लूप. फाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are continuous curves. कंटिन्यूस कर्व्स है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी रहेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूस रहेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गया फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गया फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. इस टाइप से नहीं है. दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस कर्व्स. क्लोज नहीं है बट दे आर कंटिन्यूस. Electric field lines are perpendicular to the surface of the conductor, which is positively or negatively charged. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं अगर वो सरफेस चार्ज हो, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. So these are some important properties of electric field lines, and based on these properties we can draw some electric field lines. So let us try to draw some electric field lines. So the topic is electric field lines due to first case of positive charge. अगर हमारे पास एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता हुआ हमको मिलेगा. ठीक है. अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही सेम रहेंगे बट ये बाहर की तरफ ना जाकर अंदर की तरफ आता हुआ मिलेगा. ठीक.
Now let us take some another case. Electric field due to two positive charge. मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. Now what we know, the electric field line from plus charge will be outward. बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक दूसरे को कट तो कर सकते नहीं है, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है. तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू डाइपोल. अब ये डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल मतलब दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस. तो अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 and Q2 और we can select a plus Q and minus Q, in that case the electric field lines will be something like this. प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे, the electric field lines will look something like this. प्लस से माइनस की तरफ जाता हुआ, सॉरी यहाँ the direction will be opposite, अंदर की तरफ जाता हुआ. So these are some important electric field lines. Okay. Let's move to the next topic, and the topic is electric dipole. So what is basically electric dipole? So we can say that two equal and opposite charge separated by a small distance is called an electric dipole. So इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है माइनस चार्ज. इनके बीच का डिस्टेंस काफी स्मॉल होता है, तो एक अगर हम प्लस क्यू लिखते हैं तो दूसरा आ जाएगा माइनस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं L. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो दो चार्ज होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो काफी स्मॉल होना चाहिए. इस टाइप के इसको हम क्या बोलते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं.
कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल में हो जाएगा HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में क्या है, तो H प्लस है और Cl माइनस है, सो डेट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और NaCl मॉलिक्यूल, Na प्लस Cl माइनस, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, काफी स्मॉल होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। Fine. Now the next topic is electric dipole moment. It is represented by P. So what is basically P? So if I have two charge, or if I have an electric dipole, okay, plus Q and minus Q. So basically the electric dipole moment P is defined as the product of either charge, product of magnitude of either charge and the distance between the charge, that is Q into 2L. That represents the electric dipole moment P. Fine. Obviously electric dipole moment is a vector quantity, and if it is a vector quantity it must have a direction. Okay, the direction of electric dipole moment is from minus negative charge to positive charge. So माइनस से प्लस इसका डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक, व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट? अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, क्यू मतलब कूलम्ब, और 12 लेंथ मतलब मीटर। तो एसआई यूनिट इज कूलम्ब मीटर, and the dimensional formula will be m0 L1 T1 and take a power. Fine. So that is the electric dipole moment. Now we need to find electric field intensity due to dipole. So there will be two cases. One is on equatorial position, other on axial position, but this is we going to shoot in the next class. आज के लिए बस नहीं।